CCTV in Kejriwal house. Cops to probe everyone involved in the case. Statements of everyone in Chief Minister's home are to be recorded. Kejriwal's statement may be recorded as well. That's the latest that's coming in right now. This could be one of the big clues that the Delhi police could probe in order to, in fact, investigate the very serious charges that Swati Maliwal has levelled against the Chief Minister's chief aide, Bibhav Kumar. Now, CCTV footage could be investigated. They could look at the CCTV. Statements of everyone in the Chief Minister's house could be recorded, as well as the Chief Minister's statement, if needed, could be recorded as well. Arvind Oja is now joining us for more on this. Arvind, क्या बता सकते हैं कि पुलिस इस कार्रवाई में किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, फिलहाल जो स्वाति मालीवाल है उनका 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड कराएगी। उसके अलावा जो क्राइम सीन है वो क्राइम सीन है सीएम हाउस। इस वजह से दिल्ली पुलिस वहां विजिट कर सकती है। जो वहां पर स्टाफ थे उस दौरान ड्यूटी पे, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है। उसके अलावा स्वाति मालीवाल जिस प्राइवेट ऑटो से गई थी उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो सकता है। कल स्वाति मालीवाल का मेडिकल टेस्ट हुआ था एम्स ट्रॉमा सेंटर में, जिसमें उनकी काउंसलिंग भी हुई थी। जो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट है उस सोर्सेस के मुताबिक उनके फेस पे इंटरनल इंजरी के निशान पाए गए हैं। उसके अलावा जो एक्सरे की रिपोर्ट है, जो सिटी स्कैन की रिपोर्ट है, वो आनी अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने पूरे इंसिडेंट को नरेट किया है और रिटर्न में जो कंप्लेंट दी है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, जिसमें उन्होंने बताया है कि विभव ने उनके साथ मारपीट की, न सिर्फ उनको थप्पड़ मारे बल्कि लातों से भी मारा और बॉडी के सेंसिटिव पार्ट पर अटैक किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस कंप्लेंट पर एफआईआर रजिस्टर्ड किया है 354, 509, 506, 323। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब एक तरफ वो 164 का स्टेटमेंट स्वाति मालीवाल का रिकॉर्ड होगा, वहीं अब विभव की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है और बहुत मुमकिन है, जो सोर्स बता रहे हैं कि विभव को दिल्ली पुलिस इस मामले में अरेस्ट करेगी। उसके बाद उनसे पूछताछ होगी, लेकिन जांच के दायरे में जो भी आएगा उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा क्राइम सीन पर जो लोग भी मौजूद थे। आपको बताऊंगा, और सबसे पहले जो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर श्रेया इस वक्त मौजूद है, वहां के सीसीटीवी फुटेज भी दिल्ली पुलिस सीज करेगी एविडेंस के तौर पर। पॉलिमिक Arvind, हमारे साथ बने रहिए. Shreya Chatterjee, my colleague, is also joining us at the moment. Shreya, what more can you tell us about what the Delhi police is going to do in terms of the investigation right now? Arvind has been telling us about recording a 164 statement of Swati Maliwal's before a magistrate and, of course, the search for Bibhav Kumar. What more are you learning from your sources? Well, Palmi, like my colleague Arvind Oja was pointing it out, the initial protocol of the medical has already been completed of Swati Maliwal. There are the initial MLC has come in, but the X-ray and the CT scan is due. But one of the main things that the investigation requires are the CCTV evidence. I'll ask my cameraman to just give you an understanding. You can see the kind of CCTV cameras that are placed at these places, because this will serve as a visual evidence of what really transpired on the 13th of May. So far as the complaint that's been described by Swati Maliwal, she was inside the drawing room of Arvind Kejriwal, where the alleged assault took place on her by Arvind Kejriwal's PS, Bibhav Kumar, following which she actually stepped out of the house and then she had taken an auto. So the entire understanding of the crime sequence, the Delhi police will be in requirement of the CCTV, for which they will be writing to the company which is actually monitoring and handling the CCTV inside the CM residence. So that will also be a long drawn process. But in the between, we will be seeing that the people involved, that includes the staff who are deployed over here, their statements will be required for what really transpired on the 13th of May. So in all likelihood, we will be seeing a Delhi police team coming before the CM house and following this entire protocol. So far as Bibhav Kumar is concerned, there's already a team of Delhi police who is working on understanding the coordinates of where Bibhav Kumar is. He was last seen with Arvind Kejriwal in Lucknow, followed by which he'd also likely gone to Punjab. So Delhi police is
focused on that. They will likely be asking Vibhav Kumar to join investigation. If he refuses to, we might just see stringent action happening on that part. But today, the most important thing that will be finished under process will be the 164 statement of Swati Maliwal that will be recorded today itself.